जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम।
Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. In today's elevated versions, Baba has taught children while doing yoga. Some of the sisters and brothers sit on the stage. In fact, only those souls should sit there who become soul conscious and remember the Father. If they don't become soul conscious and sit in yoga, then that one cannot be called as a teacher. Because there is immense power in the remembrance of the Father. So the devotion doesn't have this power. The remembrance have got this power. Saints and sannyasis call this power as the power of remembrance. Whereas we don't call the power of yoga, whereas it is the power of the remembrance. So when we become soul conscious and when we become detached from this body, and when we become the one without an image and remember the one who is without image, then those powerful vibrations will get spreaded in the atmosphere. Today is 8th May 2025. Let's listen to Murli. The essence is sweet children, become soul conscious and remember the Father. You will accumulate the power of yoga. With the power of yoga, you can claim the kingdom of the whole world. With the power of remembrance, one can make the sense organs cool, and when one becomes the conqueror of sense organs, then one can become the conqueror of the world. Question: what was not in your thoughts or dreams of you children, but which has now become practical? What is that? Answer: you didn't even dream or think that you would study Raj Yoga and become the master of the world.
You study this knowledge for claiming that kingdom. अभी तुम्हें अथाह खुशी है You have infinite happiness that कि सर्वशक्तिमान you are receiving power from the Almighty Authority, बल लेकर and you are claiming that right to self sovereignty of the golden aged kingdom. स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। Om Shanti. यहाँ बच्चियाँ बैठती हैं You daughters are sitting here to practice this. वास्तव में यहाँ In fact, सिनरी पर it is those who are soul conscious चाहिए and remembering the Father अभिमानी बन बाप की याद में who should sit here. अगर याद में नहीं बैठेंगी If she is not sitting in remembrance, she should not be called a teacher. सकती। बाबा तो कहते हैं Baba says quite often that और विचार में बैठेंगे if you sit in that gathering with other thoughts, then the atmosphere get disturbed. याद में शक्ति रहती Because there is power in remembrance, शक्ति नहीं there is no power in knowledge. इसको कहा ही जाता है याद का बल। It is called the power of yoga. योग बल सन्यासियों का अक्षर है। The power of yoga is an expression that saints or sannyasis use. शब्द काम में नहीं लाते। The Father doesn't use difficult words. कहते हैं, The Father says, बच्चे अब बाप को याद children, you remember the Father. वो बाबा कहते हैं Baba calls yoga as remembrance. जैसे छोटे बच्चे Just बाप like को children याद करते हैं remember their parents, that is father and mother. भारी है। Of course, they are physical parents. तुम बच्चे हो विचित्र You children are without images. यह चित्र यहाँ तुमको मिलता You receive these bodies here. तुम रहने वाले विचित्र देश के हो Even you are the residents of that world where there are no images. चित्र रहता नहीं। Where there are no images at all, there are no bodies. First of all, make it very firm that you are souls. इसलिए बाबा कहते हैं Therefore, the Father says, children become बच्चे देख soul conscious. अभिमानी बन। अपने को आत्मा निश्चय कर। तुम निर्वाण Have देश the faith that से you are आए। souls and you have come from that land of Nirvana. सभी आत्माओं का घर है। That is the home of all the souls. वहाँ से यहाँ The बारह soul बजाने आते। comes from up above to play the पहले roles पहले here. कौन आते हैं Who comes first? ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। This also is in your दुनिया में intellect. कोई नहीं जिसको ये ज्ञान हो। No one else in the world has this अब knowledge. बाप कहते हैं Now the Father says, शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उनको just भूल जाओ। forget all the things that you have studied in श्री scriptures. कृष्ण की महिमा फलाने की महिमा कितनी करते हैं People sing the praise of Sri Krishna and so, कितनी महिमा करते हैं so much. They even praise Mahatma Gandhi so much जैसे कि as if वो राम राज्य स्थापन करके गए as if he did establish the kingdom of परंतु शिव भगवान आदि Heaven, सनातन whereas राजा रानी के राज्य
Whereas the laws that existed in the kingdom of the original eternal deity religion, it is the Father who taught this Raj Yoga and made उस the kings and queens. ईश्वरीय रस्म रिवाज को तोड़ डाला। All that laws बोला were राजाई broken चाहिए, and said that we don't want the kingdom. प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। They wanted government where people rule over people. उसकी क्या हालत हुई? Now look at the situation of that decision. गांधी जी ने तो लोकशाही का राज्य बनाया, परंतु उसकी हालत Gandhi क्या ji हुई? made that दुख ही दुख है। world, but you just look what is the condition of that world. There is a lot of sorrow. People just quarrel among themselves. मतें हो गई हैं। There are many opinions. अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो। Now you children are claiming the kingdom by following Srimad. ताकत रहती है। You have so much power that there are no armies there. लश्कर आग होता नहीं, वहाँ डर की कोई। There is no question of any fear there. इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। It used to be the kingdom of Lakshmi and Narayan. राज्य था। It was that undivided kingdom. दो थे ही नहीं, The duality which could have caused conflict was not there. को कहा ही जाता है This is called an undivided kingdom. राज्य। तुम बच्चों को बाप The Father makes you children into deities. अद्वैत मत से Baba makes हम you. देवता बनते हैं, और द्वैत से Baba says, when you follow different dictates, then you become, रावण द्वारा you will not become a deity. When you follow the dictates of the Father, you become deities. सारे विश्व के मालिक थे। The people of Bharat were the masters of the whole world याद बल से मिला था, because you claimed that बल world sovereignty through the power of remembrance. Now you are again claiming that right. है। कल्प कल्प मिलता है सिर्फ याद के बल से। You claim that every cycle only through the power of remembrance. There is of course a power in studying. डर बनते हैं, Similarly, when someone becomes a barrister, there is a power in that वह है पाई पैसे that position. But Baba says it is a power worth pennies. योग बल से But you rule the whole world with the power of remembrance. सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। Because you receive the power from the Almighty Authority, बाबा you say, Baba, हम कल्प कल्प आप से सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, we are claiming that kingdom of the golden age every cycle and then we lose it. Then again we claim it. ये तो कल्प कल्प This is fixed in the drama. तुमको पूरा ज्ञान मिला। You have got the entire knowledge. श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं। Now we are receiving the kingdom of the elevated world यह through रचना Srimad. और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। Because you children have the knowledge of the creator and creation at this time. नहीं होगा Even this Lakshmi and Narayan doesn't have this knowledge that how did we claim the kingdom. यहाँ तुम पढ़ते हो, Here you study, फिर जाकर राजाई करते हो। then you go and rule the kingdom. अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं There are few souls who go and take birth in a rich families. कि इसने That is why it is said that that soul would have done कर्म किया है,
that soul would have done some good actions, a lot of donations and charitable actions. ऐसा जन्म मिलता है। As our actions determine our birth, अभी तो ये है ही, अभी तो सारी दुनिया पर रावण राज्य now there is the rule of Ravan over the entire world, वो विकर्म and whatever actions are performed in the उतरनी Ravan's kingdom, it becomes sinful actions, and every soul has to come down the ladder. दैवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। The highest तो रजो souls of the original deity religion also must come down the ladder, and those souls have to pass through the stages of Sato, Rajo, Tamo, and it's quite common that every new object or thing becomes old. अथाह खुशी होनी चाहिए। Now you children have limitless happiness, तुम्हारे that ख्वाब में भी नहीं what was not in your thought and dreams, के मालिक बनते। that you become the master of the world. कलयुग के अंत में इतने साधारण बन गए, Because we became so ordinary in this iron age, संकल्प में स्वप्न में भी नहीं आता कि we didn't even dream or think सतयुगी that we would claim that sovereignty. भारतवासी जानते हैं Because the people of Bharat कि know लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य this Lakshmi Narayans, है। they ruled the entire world and they were worthy of worship, and then they became worshipper. जाता है It's also sung that आपे ही पूज्य और you are worthy of worship and you are worshipper. अब तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए। ये नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। It must stay in your intellects, and this drama is wonderful. 84 जन्म लेते हैं, How do we claim? How do we take that 84 birth? No one knows this. 84 लाख जन्म लगा दिए। It is mentioned as 84 lakh births in the scriptures, and the Father says, ये सब भक्ति मार्ग के कपोड़े all these are false stories of the path of devotion, राज्य है ना। because it is Ravan's kingdom राम now. राज्य और रावण राज्य कैसे होता है? How Ram's kingdom and Ravan's kingdom get created. और कोई की बुद्धि में No one knows about this except you children. कहते हैं ना, Baba says we must become knowledgeful. पतित बनाता है, Who makes us impure? Who makes us pure? कौन दुख देता है? Who gives us sorrow? Who gives us that happiness? शिव बाबा की और रावण की क्लियर What नॉलेज is होनी one should have the clear knowledge of the Ravan and Shiv Baba. रावण को हर वर्ष जलाते हैं। People burn an effigy every year because he's the enemy. 5 विकार मनुष्य के दुश्मन। Because all these 5 vices are one's enemies. जो भी विकार आया, व्यर्थ आया, मन में बिठा दिया। We whatever thoughts we came, and we have made our mind a guest house for all kinds of thoughts. Who is Ravan, जलाते हैं and why do you burn the effigy? No one knows this. जो अपने को संगम युगी समझते, Those who consider themselves as confluence aged Brahmins, it will be in their awareness that हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। now we are becoming the elevated beings, because God is teaching us the Raj Yoga, नर से नारायण, and He is making भ्रष्टाचारी from an ordinary man into an elevated being, भ्रष्टाचारी बना। and from the one who is corrupted into the one who is elevated. तुम बच्चे जानते हो, You children know that को ऊंचे से ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं।
you know that the highest on high incorporeal Father is teaching us you should have limitless happiness. कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में If someone gets an admission in a very well known university, खुश होते, how much that student would be happy. प्रिंसिपल तो ये है, हम तो Our फलानी principal is यूनिवर्सिटी this में पढ़ते Baba, so we study in this university. अथाह खुशी So होनी there चाहिए। must be limitless happiness. स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम तो स्टूडेंट हैं। Students always remember कॉमन about their टीचर role. पढ़ाने वाला Of course, those teachers are very common, whereas here God is teaching us. जब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है, When you receive such a high position from this study, then how well you should study. माताएं Mothers, कौन पढ़ाते हैं हमें? who is teaching us? भगवान पढ़ाते। God is teaching us. किसकी स्कूल में बैठे? In whose school are you sitting? भगवान की It is ईश्वरीय God's school. विद्यालय कहा जाता है। It is called जब पढ़ाई the World से Spiritual इतना University. ऊंच पद मिलता है, When you receive such a high position from this study, then how well you should study. बिल्कुल जागृत होकर बैठना चाहिए। One must always be alert जरा while भी sitting here. नींद नहीं आनी चाहिए। One should not माताएं तो be 2 sleepy, बजे 3 बजे उठ जाती because हैं। mothers always wake up at 2 or 3 ठंडी a.m. ठंडी and आवाज़ they में fall asleep here in class. है बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। It's very simple. You have to give half an hour to 1 hour every day, भूल जाती because you forget remembering the Father in your daily routine. यहाँ सवेरे आकर That is why. याद में बैठ। So you come here and sit in remembrance. बाबा को बहुत प्रेम से याद कर। It's always said that you should remember such a Father with so much love. Baba, हमको पढ़ाने आए, you have come to teach us. अभी हमको पता पड़ा है We now know that कि आप 5000 You वर्ष come बाद आकर पढ़ाते हैं। 5,000 बाबा के after पास 5,000 years, आते हैं, and you had taught us 5,000 years back also. पूछते हैं कि आगे कब मिले हो। Baba just asked children, क्या जवाब देंगे? when did you meet me? ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आज पूछ न सकते। No saints or sannyasis can ask such a question. चक्र का ज्ञान ही नहीं है। They don't have the knowledge of the cycle, then what else they will ask? Or how can they ask? सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं, Anyone can go and sit in the gathering. को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी People अगर get influenced just by that crowd and they start entering the place. But you understand that खुशी से जाकर how सुनते even you used to go and listen to those scriptures, that is Gita or Ramayana. समझते तो कुछ नहीं थे। Of course, you didn't understand anything. वह सब भक्ति की ही खुशी है। That is the happiness which was there at that time on the path of devotion. You used to dance in that happiness. नीचे भी उतरते जाते हैं। Of course, you start coming down the ladder in that happiness. और नीचे उतरते जाते हैं। You dance in happiness and you come down the ladder. योग आदि करते हैं। There are many types of hatha yogas भक्ति के लिए just ही सब to करते हैं। just to be तो healthy. बाप समझाते हैं, The Father ये explains सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। all these things are the paraphernalia of the path of devotion. No one knows the creator or the creation. What else is left? When you don't understand the creator or the creation, ही तो जानने योग्य बातें
Only these two things are worth ही नहीं to be जानते understood. तो बाकी रहा Then if you don't understand, then what else रचयिता you रचना को understood? जानने से When you understand the creator and the creation, what do you become? और न जानने से तुम क्या बन पड़ते And if you don't understand, what do you जानने become? से सॉल्वेंट बन When you know the creator and the creation, you become solvent. And when you don't understand that, भारतवासी the people of the insolvent Bharat became insolvent. भक्ति में तो क्या क्या कथा कहानियाँ बना दी Whatever, महाभारत में all भी the क्या stories क्या which लिख were दिया, created on the path of रामायण devotion, में भी क्या क्या लिख what and all things were mentioned in the Gita or Ramayana, there is no true knowledge in that. गपोड़े मारते रहते Just they हर cook शास्त्र में or they start telling false stories. They have written all the false stories in all the क्या scriptures. दुनिया में होता रहता है What and all things will happen in the world? पैसे सोना आदि लूटते हैं How much money and gold पूरी चोर लुटेरों की बन गई है will be looted? क्या क्या करते The whole world itself is of thieves. अब तुम बच्चे जानते हो Now you children know that सोने के महल बनाएंगे we build the palaces studded with jewels. We study the barrister. रहता है Of course, one will have this in the awareness that once I pass this exam, then I do this or that. बनाएंगे I build buildings. क्या सोचते Those students always क्यों नहीं बुद्धि में आता think. So why don't you have such thoughts when you are also studying? का प्रिंस That प्रिंसेस बनने के लिए you are studying to become the prince or princess of the world. So how much happiness you should have? बाहर जाने से ही खुशी गुम हो जाती But your happiness disappears the moment you go out of the class. ये तो पक्के निश्चय बुद्धि बन Now गए all of you are sitting in that firm faith. कि All of you have that faith. The moment you go out from the gate, खुशी हमारी गुम नहीं होती है whereas now your happiness remains, right? छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं All the young daughters would emerge. समझते नहीं The relatives don't understand anything. कह देते हैं जादू हुआ They say that a magic spell has been cast on them. कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे They say that they will not allow their daughters study बच्चियां आती this knowledge. Very young daughters come, उनके माता पिता मित्र सब then their parents, friends, and relatives, they don't allow them to study. इस हालत में जब सगीर है तो माँ बाप Under such circumstances, if you are still dependent on your parents, you have to listen to your parents. We can't take you. यज्ञ ले नहीं सकता है Baba says, we cannot take you, otherwise there will be a lot of conflict. कहे हम 18 वर्ष की हैं Daughter would say she is 18 years old, and father would say she is only 16 years old, माँ बाप बदल जाते हैं because parents just तो बच्चों change. को अपना सर्टिफिकेट रखना चाहिए Now all the daughters are supposed to keep their certificates. 16 वर्ष की है सगीर है Father would say that she is 16 years old, that she is still dependent on him. He would fight in that way and take her away. सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना To be dependent on your father means you still have to follow your father's orders. You cannot be called an adult. You are just a. बालिग है फिर जो चाहे सो करे When you become an adult, you can do whatever you want. भी है ना There are, of course, laws. बाप कहते तुम जब बाप के पास Baba says it's also a rule that when you come to the father, you must bring for sisters and brothers. What is that law? अपने माँ बाप से You must get that letter from your parents.
You must get that letter. फिर मैनर्स भी देखने होते, Manners of each one also will be observed. मैनर्स ठीक नहीं है If their manners are not good, then they will be sent back home. छोटी आयु की बहनों को The younger sisters जाना पड़े, will have to go back. खेल में भी ऐसे It is the same in the game, right? ठीक नहीं खेलते हैं, If someone doesn't play well in a game, he or she is told to leave the game आबरू गंवाते, because they would make the team lose their honor. बच्चे जानते हो You children know that you are now on a battlefield. कल्प कल्प The Father comes every cycle and enables us to conquer Maya. जीत पहनाते, मूल बात ही, The main thing is to become pure. मूल बात क्या है? What is the main thing? हाँ? पावन बनने की, Is to become pure, is to conquer Maya. पतित बने हैं विकार से, One has become impure through vices, and Baba says, lust is the greatest enemy. ये आदि मत It causes sorrow from its beginning, middle, and through end. जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर Those who become Brahmins, they go into the deity religion. पतित बनेंगे वो Those आदि मध्य अंत, those who become impure, they experience sorrow from the beginning till end. ब्राह्मणों में भी You Brahmins are also number wise. क्षमा पर परवाने आते हैं, When moths go to a कोई तो flame, जल मरते some completely sacrifice themselves, while others die. चले जाते हैं, They completely surrender and die, while others simply take a round and go back. सुनकर When some children come here, some sacrifice themselves to the flame completely, whereas others simply listen to this knowledge and then leave. आगे तो ब्लड से ही लिख कर Earlier, children used to write with blood that Baba, हम आपके हैं, Baba, I belong to you. फिर भी माया हरा देती, And despite that, Maya defeated them. इतनी माया की युद्ध चलती So much battle takes place with Maya, that is why it is called battlefield. कहा जाता, ये भी तुम समझते, You also understand that Supreme Father, Supreme Soul is explaining ब्रह्मा the essence of all the Vedas सभी and वेदों scriptures. शास्त्रों का सार समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा Brahma, Shiv Baba through Brahma Baba, he explains the essence of all the scriptures. और भक्ति में उन्होंने क्या बना दिया, What was made by them on the path of devotion, शास्त्र दिखाई, they have depicted Brahma with those scriptures and Vedas. ढेर बना दिए हैं ना, Of course, many images have been made, मिसाल किस समय का है, and सब the example of Narad is also हम लक्ष्मी belongs to this time. नारायण बनेंगे, All of you say that you become Lakshmi or Narayan. कौन कौन कहते हैं, Who says this? सब कहते हैं, Everyone says, right? टीचर्स नहीं कहती, हाँ? सबको घर पे नशा नहीं है, माता जी टीवी देखती है, पर यहाँ की मुरली टीवी पर लाने के लिए कौन सा नंबर लगाना चाहिए? अपने अंदर में देखो, हम लायक हैं, गुजराती हमारे देखो, में हिंदी कोई चलेगा। विकार तो नहीं बाबा है, बोलते हैं हिंदी वो चलेगा, नारद भक्त तो सब है ना, यहाँ पे नहीं है ना, तो इधर नहीं है सब कोई, भक्ति ने किया है ये ना, कब आएंगे? और भक्ति का फल ज्ञान मिला है, अब लक्ष्मी या नारायण बन रहे हैं, Now we have got this knowledge that we are becoming Lakshmi and Narayan. देखो So one must check oneself whether am I worthy to become? हमारे में कोई विकार, Do I have any trace of vices? नारद भक्त तो सब है ना, ये तो एक मिसाल ली, All
everyone is like Narad, just they represented one in the form of an example. वाले कहते हैं The people of the devotion say that, लक्ष्मी को वर सकते हैं have I become worthy to marry Sri Lakshmi? Baba says, no. जब ज्ञान सुने Only when you listen to this knowledge पा सके would they be able to receive salvation. तीत पावन ही सब Only I, the purifier, can grant salvation to everyone. अभी तुम समझते हो You now understand that Father is liberating you from रावण the kingdom of Ravan. कर रहे हैं वह है जिस्मानी या Those pilgrimages are physical. भगवान उवाच मन मना God speaks, man mana above. अभी से मुझे याद You must remember the Father with your mind and intellect. के खाने की बात नहीं There is no question of stumbling around in this. वह सब है भक्ति मार्ग के घट All of that is stumbling on the path of devotion. ब्रह्मा का दिन आधा कल Half a day is of Brahma and another half is of वह सब है भक्ति night. मार्ग के घट के And all that तुम where people समझते stumble हो, on the वह path of सब devotion. भक्ति का अभी आधा कल दिन होगा You know that धाम में होंगे there will be a day for half a cycle for all the Brahma Kumars and Kumaris. We will be in that land of happiness. There will not be any devotion there. You children know that you are becoming the wealthiest of all. तो कितनी So you should have so much happiness. बाबा ने इतनी बातों के लिए कहा कितनी खुशी Baba talked about all those aspects because of which we should be very happy. We become the master of the world. Then it is God who is teaching us. So we must have a lot of happiness कार बनते and we become the richest of all. सब पहले रफ पत्थर थे You were like rough stones. हीरा घिसते हैं ना तो पहले वो They always use, होता है when you make अब बाप a diamond, ज्ञान की सिरान पर चढ़ा रहे now Baba is now putting on edge. चढ़ाकर They put on the edge and then clean that. तब जाके And then चमकता बनता Then they make बाबा that stone into a flawless diamond. चढ़ाते Baba also puts you on that earth, हरी भी है ना and he is a jewel merchant. जौहरी थे ना He was also a jewel merchant. So he knows, रामा अनुसार according to the drama, Baba has taken experienced chariot. गायन भी है ना It is also said that गांव का छोरा he is a village urchin. भी अपनी कहानी बताते हैं Baba also talked about his story that he was a village urchin. और He was wearing a hat or a cap and he didn't even have the footwear. श्री कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है How could Sri Krishna be that village urchin? He used to exist in the golden age. वो तो झूलों में झुलाते हैं ताज People used to rock him in cradle and they used to make him wear a crown. Then why do they call गांव के a village urchin? कहते Because village urchins would be dirty सुंदर बनने आए and you have now come here to become beautiful. ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते The Father puts you on the cutting edge of this knowledge. संग कल्प कल्प Only once in your every cycle you receive the company of truth. मिलता है बाकी सब है झूठ संग Rest all, everything is false. संग मिलता है वो तो झूठ संग है इसलिए बाबा कहते That is why the Father says, hear no evil. इविल ऐसी बातें Don't listen to such things that defame you and me. जहाँ हमारी परमात्मा की और तुम्हारी
that is where people defame the deities or the Supreme Soul. क्या क्या लिखा है, What and all things have been और mentioned in the देवी देवता scriptures, की गिलानी लिखी। only the defamation of each and every deity. अब जो कुमारियाँ The Kumaris ज्ञान में आती हैं, who come into this knowledge could say that they have a share in their father's property. हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा कह सकती है ऐसा? कुमारियाँ हाथ उठाओ, हाँ? है हिम्मत कहने की? Do you have the courage to say? कौन कौन कुमारियाँ बैठी है? थोड़ा खड़े हो जाओ, Just stand. खड़े हो जाओ कुमारियाँ। देखो भाइयों, कितनी कुमारियाँ। Just look, brothers. How many Kumaris are सबकी there? छुट्टी है वैकेशन में सेवा करते Everyone हैं। has received the permission to टीचर्स do service, के साथ or they have come with the teachers, sisters. Very nice. Sit. जो कुमारियाँ ज्ञान में आती All those Kumaris who come into the knowledge, सकती है and they can say that they have a share in their father's property. हिस्सा, क्यों न हम Why shouldn't I open a center for serving Bharat? सेवा अर्थ सेंटर खोल, हाँ? कह सकती है, Can you say? खोल सकती है। Can you open a center? शुरू में नलिनी दीदी निर्मला In the initial के पिता ने times, पैसे दिए से सेंटर खोले। Nalini Didi ji and Nirmala Didi ji, they opened centers दान को देना with their share. One has to give. पिता को पैसे तो खर्च करने ही हैं, The father anyways has to spend money. वह हिस्सा हमको दो। Just give that share to me so that I can open a center and many will be benefited. बहुतों का कल्याण होगा, ऐसी Create such tactics. रचनी चाहिए। ये है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। This is your godly mission. नरी काम करती रहती है ना, It just continues, it goes to every village. हमें भी ये ईश्वरीय मिशनरी है। And this is your godly mission. अपने पिता के पैसे से And we must also सेंटर खोल ले। open a center with the share of our property. जो हमारे धर्म के Those who belong to our religion will come. ईश्वरीय मिशन, तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। You change the ones with the stone intellect into those with the divine intellects, and those who belong to this religion, they will come. एक ही घर में In the same family, देवी देवता धर्म का those who निकल are to be flowers of the deity religion, they will emerge, and the rest won't. मेहनत लगती It does take effort. बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर That is why को ले the Father purifies all the souls and takes everyone back home. ने समझाया। That is why Baba has told you to explain that confluence age in the picture of the cycle. इस तरफ है कलयुग, This side is the Iron Age and that side is the Golden Age. सतयुग में In the Golden Age there are deities. In the Iron Age there are devils. इसको कहा It is called the most auspicious confluence age. संगम युग। संगम युग में हम पुरुषोत्तम बनते हैं। बाप ही The Father makes you into the most elevated human beings. जो पढ़ेंगे Those who study very well will go into the Golden Age. बाकी Then everyone else will go to the land of liberation. चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। Then they will come down at their own time. चित्र The picture of the cycle is very good. बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। You children should have the zeal and enthusiasm to do service and to do such service that you uplift the poor and make them into the masters of heaven. वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, Acha. मीठे
The sweetest, beloved, long lost and now found children, love, remembrance, and good morning from the mother, father, and Bap Dada. And the spiritual father says namaste to those spiritual children, and we spiritual children also offer love, remembrance, and say good morning, namaste to the mother, father, and Bap Dada. प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुरली का मुख्य सार The essence for dharana, the first one, अपने आप check yourself to see whether हम you are able to become like Sri Krishna or Sri Narayan. श्री नारायण समान बन सकते हैं Or do you have any vices in you? हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने Are you the one who just comes and takes a round, or the one who completely sacrifices कौन से yourself? What kind of the moth you are? है? The one who sacrifices completely. मैनर्स तो नहीं है Your manners are not such that you would cause the father's dignity to be lost. जाए। दूसरी पॉइंट The second one, अथाह in order to stay in limitless happiness, के लिए remember the Father early in the morning with a lot of love and study well. सवेरे प्रेम से बाबा को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। And one must study. भगवान हमें पढ़ाकर God पुरुषों is teaching us बना and making us into the most elevated human beings. हम संगम युगी So maintain the intoxication that you are at this conference age. सच्चा और पक्का ब्राह्मण बनना ही पुरुषों Becoming a true Brahmin and a very बाप दादा का आज pure का Brahmin दान है is becoming an elevated human being. Blessing. भवों द्वारा May you become an image of experience and reveal the Father with your experience of all virtues. अनुभवी मूरत भव। जो बाप के गुण गाते हो उन Whatever you sing the Father's praise, become an experience of that. जैसे बाप आनंद का सागर As how the Father is the ocean of bliss, तो उसी आनंद के सागर की लहरों में move, लहराते just move along with जो in that waves of the ocean of bliss. Whoever comes in your contact, comes into your connection with you, experience that bliss, love, and happiness, and of all the virtues. ऐसे Become an embodiment of virtues in that way, तो आप भी then आप द्वारा बाप the Father's image will be revealed through you. बाबा कहते हैं आप में बाप Baba says that Baba should be visible through you, आत्मा because only you great souls, you images of experience, can reveal the Supreme Soul. अनुभवी मूरत से प्रत्यक्ष कर सकते। स्लोगन है Slogan: कारण को transform reason into solutions and अशुभ बात को accept something inauspicious as auspicious.
अशुभ बात बनी हो तो If anything inauspicious things come up, बदल कर you must शुभ बना। accept it as auspicious. अव्यक्त इशारा है, Today's Avyakt signal. रूहानी रॉयलिटी Imbibe the personality of spiritual royalty and purity. धारण करने के लिए आज का इशारा है। Today's signal. ब्राह्मणों की The lives of Brahmins and the donation of life is purity. दान पवित्रता है। The original and eternal form is purity. स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति When you are aware that you are originally a pure and eternal soul, आदि पवित्र आत्मा हूँ, that awareness means स्मृति you आना have the power of purity. पवित्रता की समर्थी आना, स्मृति स्वरूप Those souls who are embodiments of remembrance and embodiments of power are souls with the original sanskars of purity. निजी माना Original means असली that is the eternal, क्वालिटी पवित्रता है। it is innate quality. निजी संस्कारों को immerse Always make कर your original sanskars emerge and imbibe the personality of purity. को धारण करो। ये है आज का इशारा। Today's signal is this: अनादि I am original and eternal pure soul. ये स्मृति आना माना If this comes in your awareness, then you will get that power to imbibe the complete purity. आज सतगुरुवार है। Today is Satguruvar. ओम शांति। Om Shanti. जैसे बताया सतगुरुवार है, सभी भाई बहन बैठ As how the sister said, today is Satguruvar. We will offer Bhog to Baba. दादी जी मीटिंग हॉल में रहेगा। Evening meditation will be in Dadiji's meeting hall from 6 to 8 p.m. All those who have offered your names for the Bhog to be offered, all of you are requested to carry that slip and संदेश सुनेंगे, उसके बाद सिटिंग रूम में आप and जाएंगे और आप please be in the sitting room where the trans messenger sister will meet all of you. Let's remember Baba till the trans messenger sister comes.
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार।
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
Om Shanti. I reached आज जैसे ही the subtle region near Baba to offer bhog. मैं गई, As soon as I reached that region, मैं देखती हूँ बाबा I saw बहुत ऊंची पहाड़ी पर बाबा खड़े हुए हैं। Baba stood on a high mountain. नीचे से कहा बाबा मैं I called Baba. आई हूँ, सब Baba, I came प्यार लेकर के आई हूँ। आप इतना to offer bhog, पर मैं and I took everyone's wishes, love, and remembrance. You are standing on the peak of the mountain. दोनों बाहों फैलाकर Baba just opened his arms कहा, आओ बच्चे तुम भी ऊपर and he just called me करीब आओ। to go near Baba. पर जैसे ही ऊपर की ओर जाने लगी, As I started going up, स्टेप थे, there were a few steps. कुछ सीधा रास्ता था, It was a straight कुछ थोड़ा path, टूटा रास्ता भी and दिखाई दे रहा है। some of the path was not that clear. It was broken. स्टेप पर चढ़ना शुरू किया। As I started climbing the steps, उन स्टेप पर लिखा हुआ था सीढ़ियों पर it was written on those कि steps that सबसे पहले निश्चय चाहिए। first of all one should have the faith, निश्चय होगा तो चढ़ पाएंगे। then you will be able to climb that. फिर दूसरा लिखा हुआ था Second दूसरे one, स्टेप पर हिम्मत, courage, फिर उमंग, उत्साह, then zeal and ऐसे enthusiasm. कुछ बातें स्टेप पर सीढ़ियों की So such लिखा हुआ था। virtues were written on those चढ़ती भी steps. जा रही हूँ, I'm just climbing up and going, देखती भी जा रही हूँ। and I'm seeing and बाबा going ने near फिर Baba. कहा, "बच्ची और Then Baba जल्दी said, आओ।" come fast. फिर जैसे ही थोड़ा रफ्तार तेज करते हैं As I increased my speed of going, तो थोड़ा पाँव भी फिसलने का, क्योंकि रास्ता थोड़ा since ऊपर नीचे the हो रहा है, path was not that, तो बाबा ने कहा कि it was not बाबा that हाथ पकड़ता good, है, there was this chance of ऊपर slippery. पहुंच जाऊं। So Baba will just hold the बाबा hand, ने just वैसे come up. ही हाथ पकड़ा Then Baba held my और hand, ऊपर की तरफ बाबा के करीब पहुंची। and I went near Baba. तो बाबा ने कहा कि बच्ची, आज बाबा ने ये दृश्य क्यों इमर्ज किया है? Why did Baba emerge this scene? आज ये दृश्य बाबा ने नए पुराने बच्चों के लिए, विशेष Baba आने did वाली that for आत्माओं के लिए भी the new as well as old children and the ones who are about to come. बाबा ने कहा कि Baba said, इस ऊंची पहाड़ी पर, इस ज्ञान की ऊंची मंजिल पर the highest destination of this knowledge and to reach the peak of the mountain, सबसे पहले निश्चय चाहिए। the first and the foremost thing is that बाकी faith. निश्चय होगा To have faith तो in the आप Father, एक कदम आगे बढ़ाएंगे। you just take one step ahead. और आप बच्चों And ने Baba, एक कदम बढ़ाया The moment you take that step, तो बाबा 1000 कदम Baba will take 1,000 का steps हाथ of अपनी तरफ support. खींच लेते हैं बच्चों को। and he will just तो फिर बाबा Make ने children दृश्य come एक और दिखाया उसके his साथ way or towards him. कि जब Along with सीढ़ी Baba पर emerged one more scene. या स्टेप पर या थोड़ा रास्ता ऐसा होता है Sometimes when you उस take पर दो the जने stairs मिल करके चलते हैं। or the path where तो two बाबा ने just कहा कि देखो climb. बच्ची, जब अकेले चलते हैं तो बहुत अपने आप में When you walk alone, हिम्मत रख के चलते हैं। when you always keep that courage and walk, you always have the zeal and कभी enthusiasm. दूसरा साथी मिल जाता है, When you get a कोई friend, कुछ सुनाने वाला, कुछ कहने वाला, the one who always gives you तो some news, रफ्तार क्या हो जाती है, थोड़ी then the speed gets धीमी हो decreased. जाती है। तो
तो ठीक उसी प्रकार बाबा ने कहा कि जब बाबा के बच्चे In the same way, ज्ञान like में Baba's चलते children, हैं, नए नए भी आते all हैं, those who come, all the new बाबा का children who पुराने come, तो परिपक्व हो गए, the old ones have पर जो become नए very आते हैं strong कई दूसरों की बात भी or सुन complete, लेते हैं, and the new ones, when तो they उनके listen कदम anyone's थोड़े धीरे हो जाते हैं, any news, चलना थोड़ा धीमा पड़ then जाता है। their speed of तो बाबा ने कहा कि walking or climbing becomes जब little बच्चों slow. में एक ही निश्चय, एक ही लगन, When there is one faith and one that passion, that love for the तो Father, बाबा ने कहा आप बच्चे then अपनी मंजिल पर you children सही रीति से पहुंच will जाते हैं। reach the destination तो इसलिए बाबा on time. आज विशेष चाहे नए चाहे पुराने बच्चों के लिए So today, whether it is for old children or new children, Baba just बच्चों का उमंग उत्साह भी कम ना हो, Baba और tells हिम्मत का जो children not to कदम reduce the zeal and बच्चे enthusiasm रखते हैं, and the courageous तो step बाबा की that भी you take मदद उन बच्चों को will बहुत definitely सहज let रीति से Father मिलती है। फिर एकदम give से his जैसे support. बाबा नीचे उतर के आए, Then Baba also हमको came भी down, साथ नीचे लेके आए, and I also went along with Baba. तो बाबा ने कहा कि Then Baba said, सूक्ष्म वतन में तो बाबा के पास बच्चों की याद पहुंचती रहती है, the subtle region always remembers the love and remembrance of the children, and this is the special time when तो ऑटोमेटिकली बच्चों को भी सिमटती रहती है और औरों को भी सिमटती, you children have this new awareness and अपने में बल भरने का, to fill दूसरों में yourself बल भरने का with that power and to let others also feel that, fill others with that power. That time has come now. बाबा के सर्वभोग की थाली रखी थी, बाबा ने And भी बड़े Bhog प्यार was in से front of Baba. भोग स्वीकार Baba also accepted the Bhog बाबा ने फिर सभी and बहुत he gave his love and remembrance, दिल की याद प्यार दी। and love filled remembrance. And I came down to the corporeal taking his love filled remembrance. Om Shanti. Let's watch respected Gulzar Dadiji's video. एक ओम शांति कहने से 3 बार By saying Om Shanti once, you remember 3 things. First, Om Shanti means I am a peaceful soul. ओम शांति का अर्थ ही है मैं आत्मा I, the soul, I am a peaceful soul, अपना स्वरूप याद आया। which reminds me of my true nature. और दूसरी बात, And the second thing is तो मुझे आत्मा the का father of the soul, जो पिता है परमात्मा, the supreme soul, वो भी शांति का सागर है। is the ocean of peace. सिर्फ शांति का नहीं, लेकिन सुख प्रेम सबका सागर है। But he is the ocean of happiness, love, all virtues. विशेष ओम शांति है तो शांति का सागर। Since we say Om Shanti, when an ocean of peace is specially emphasized. And the third one is when I come on to this stage, इस like world to play my role, पर पाठ बजाने आई Om Shanti.